ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੂਲ ਦੀ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਾਰਨਰ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਤਮਾਕੀ ਮਕੋਰੋ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ ਨੇ ਇਹ ਐਥਨਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। So welcome to the show medicine once again, and thank you for your time. And I would like to ask you first question first, how about the statistics at the stage if we're looking at Tamaki Makaurau, wider Tamaki Makaurau? I mean, we are very thick populated as compared to other parts of New Zealand, and of course we will have more drowning incidents in Auckland as compared to other parts of the nation. Drowning incidents has been one of the key hotspots for all Kiwis, quite put more attention because this is something involving our life as well. Yep. We just have the update from Water Safety New Zealand that we have every 5 years to update the drowning toll. For the past 5 years, from 2016 to 2020, entire New Zealand, we have nearly 400 people never come back alive. And particularly for New Zealand, for Auckland, Tamaki Makaurau, I think we lost 95 of them. So this is a big number for all of us, because one single life we lost, actually it's not just for the life alone, it's also about her family, friends, workplace, all the communities who are putting the very strong impact on their life. Probably was a lifetime impact. Exactly. So ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੱਪਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। So medicine, how about the Asian people? How about the people from totally different background? We don't have any seashores around in Punjab, in northern part of India. Yes. And I'm not sure about your home country. So I think the scenarios are different for every single migrant when they migrate to this country. So what is your take on this? How do you explain to the new migrant community, how do they need to be careful when they're going to the beaches, when they decided to swim? Most Asian migrants coming from their mother country, sometimes with the very inner lands like India, China, or especially those parts, people would not have such understanding about water at all. Yep. Mostly can be explored in the mother country, probably like a creek, a little river. Yeah. That's it. But all of a sudden they come to New Zealand all the way, so there'll be a brand new environment to experience. Of course. So sometimes we feel very exotic and say, "Oh yeah, this is quite good. Let's just explore the water." But again, that will be somehow resulting in some risk which you don't understand the water environment yet in New Zealand. So you enjoy the landscape, but at the same time you need to be putting more attention on your own safety as well. So Indian actually accounts for a big part of an Asian migrant at the moment. Yes. What do we talk about? The total population for entire Tamaki Makaurau is nearly 1.72 million. Yep. And the Indian migrant number probably at the moment could be around 200,000 already. And it's an equivalent amount with the Chinese. So these are two big Asian ethnics. I think will be a large portion of an Asian
population Yep. in New Zealand. But in terms of drowning, Asian accounts for number 3 after Kiwi European Very sad. and Pacific. But what surprised me was an Asian drowning actually isn't more than Maori Is in it right? Tamaki Makaurau. Yeah. Mm. So that's why we feel a bit surprised. That what's the combination? What's the reason because of that? Most drowning incurred for all of us will be in land-based fishing Yes. and rock fishing. Yep. Yeah. How about the diving? Yeah, so diving as well. Yep. But diving is a relatively a bit minority. But Okay. land-based fishing is really everybody's love too. Yes. So for Indian, I think there's something like we put more attention that when we go outside, especially it's the post-COVID, people so in love with new traffic light system and Yes. quite enjoy the coastal activities, the in on and around water. I think will be also resulting in the some incremental opportunity to put yourself on high alert for Understand. water safety as well. That's why we're here. That's right. Yeah. Thank you for this. In the meantime, I'll switch over into Hindi language. विपिन जी, हमने पिछले साल एक वीडियो देखा जिसमें हमारा एक कम्युनिटी कांस्टेबल मिस्टर सतबीर सेन वो एक जो विक्टिम था उसको बचा रहे थे, तो उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ. लोगों ने तब जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि वाटर सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए पुलिस की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, स्पेशली पीपल लाइक योरसेल्फ जो कम्युनिटी इंटरेक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रोल इन द पुलिस. सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली हमारे जो टीन एजर्स हैं जो नए नए घर से लाइसेंस लेके निकलते हैं, उनको लगता है कि वी आर ऑल सेफ एंड वी नो एवरीथिंग. तो अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसी जो घटनाएं हो जाती हैं कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता, जैसे मेडिसिन ने बताया कि दे नेवर केम बैक ऑब्वियसली जी. तो उसके लिए जो एहतियात है वो पुलिस की नज़र में कौन कौन से एहतियात आप कम्युनिटी को बताना चाहेंगे? थैंक यू. सबसे पहले हमारा जो कल्चर है यहाँ पे, जी. हम वाटर को काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते हैं. हम जाते Yes. हैं बाहर, हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी क्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं कि वाटर के नज़दीक हो. यस. तो पुलिस की Even the picnic or हाँ जी. just a day out. बीच में जाना है, वॉक करने भी जाना है, वो जस्ट शो लाइन में चले जाते हैं. तो क्या हमें करना चाहिए, स्पेशली जब आप बाहर प्रिपेयर करते हो अपने आप को जाना, पहले तो आप अकेले कभी ना जाएं. जी. आप अगर जा रहे हो तो इन्फॉर्म करके जाएं कि मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ, मैं सपोज 1 घंटे में वापस आने वाला हूँ, जी. आने वाली हूँ. तो ये करें. So you must inform your friends or family जी. that I'm going out on the beach, और or maybe going for boating or diving, जी. whatever is the water activity. जी. जैसे आप सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप अगर किसी भी वाटर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो. जी. लाइक मेरा मतलब था कि प्रिपेयर करने से कि आप पहले अपने आप को स्विमिंग आनी चाहिए. जी. अगर नहीं आ रही है तो उसको अपने को प्रिपेयर करें, जाएं, स्विमिंग क्लासेस लें और अपने बच्चों को जब वो टोडलर या छोटे होते हैं उनको एक्टिव करवाएं, पानी से फेमिलियर करवाएं. जी. मैंने देखा है कि इवन मेरे नोन में जो मेरे मेट्स हैं उनके बच्चे हैं, दे आर नियरली 2 or 4 बट Okay. स्टिल दे आर स्केयर्ड ऑफ वाटर. They're under training. ना वो उनको अभी तक familiar- ये भी So है they're कि scared of water. इंडियन कम्युनिटी में मे बी ये ऐसा है कि वो पानी के पास नहीं ले जाते हैं उनको, हाँ. क्योंकि एक तो बीइंग की हमने पहले मेडिसिन ने भी बोला कि हम इनर लैंड से आते हैं जहाँ पे हमें पानी इंडिया में बैक होम देखो या फिर चाइना में देखो Yep. कि हमारे पास हम या छोटे क्रीक या रिवर्स मिलते हैं, बिल्कुल. उस पे ही हम तो बीइंग जब मैं आया था यहाँ पे जी. आई डोंट नो हाउ टू स्विम, Exactly. पर मैंने पुलिस की ट्रेनिंग के लिए मेरे को स्विमिंग का टेस्ट क्लियर करना पड़ा, तो मैंने Yes. उसके लिए करा. पर यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बीइंग अ पेरेंट्स अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो डोंट फ्रेंड, अगर नहीं आते, अगर नहीं सीख सकते हो कोई बात नहीं, पर आपके अगर बच्चे हैं तो उनको आप उसके स्विमिंग क्लासेस में एनरोल करें. I think basic जो swimming skills है, medicine if I'm not wrong, they actually provide basic swimming lessons even during the school time, and even after you can go privately for the lessons in council swimming pools. Yep. All over the place. It is. The thing is that New Zealanders are quite concerned about the water safety education and Yes. together with the swimming skills. Unfortunately, last year, for example, we are short of water, so a lot of public schools actually closed their school pool, Oh. so as to other swimming schools as well. Yes. So that's why we'll be lacking the opportunity for youngsters to approach water. It's So this year will be another circumstance. So people will be getting happy to approach water because we have enough water right now. Things that whether are you ready for that? Is your parents ready for that too?
especially Yes. for those who are really, really young, like the age under 5. It's really, a baby toddler level. Yeah. They are also, join the water activity with the families, but is family ready to protect their safety? Mm. So this is also another key issue for all of us. For India particularly, Yes. for the past 5 years, there are 24 Asian drowning, fatal drowning died, and 10 of them from subcontinent. Oh. So Very sad. so this is also high alert, not just for the child care. It's actually about the parents' education. Are they ready for this? So this Yeah. is one of our responsibility to put in our more engagement with some lectures and some course to share, practice, exercise how to do this with Indian parents. Yeah. And also they will be benefit from themselves, and also how to make their own lectures to their kids and baby princess and prince, right? Yes. So this is very important for them. Yeah. Well said, well said. ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਪਨ ਜ਼ੈਂਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1/3 ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 1/3 ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਤਮਾਕੀ ਮੁਖੌਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਵਿਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਲੈਗਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਸਵਿਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਲੈਗਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰਾਊਡੀ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਈ ਟਾਈਡ, ਲੋ ਟਾਈਡ, ਵੈਦਰ ਕੰਡੀशंस, वो सारी चीज़ों पे निगाह किमें रखी जा सकती है। जी, आपने सही पॉइंट टच किया, मैं अभी इस पे आने ही वाला था कि जैसे आपने बोला कि फ्लैग्स के बीच में हम समटाइम अवॉइड करते हैं क्योंकि क्राउडेड होता है। yes. पर वो जो फ्लैग्स लगे हैं तो वो किसी पर्पस से लगे। जो वहाँ पे लाइफ गार्ड है उन्होंने एक एरिया डिटरमिन करा कि ये सेफेस्ट एरिया, वो उसमें में मॉनिटर कर सकते हैं। Exactly. तो अगर आप उसके अलावा आपने डिसाइड किया कि आपने किसी रिमोट बीच पे जाना है तो मेक श्योर कि आप पहले गूगल कर दें, गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल है। देखिए कि कितना डेंजरस है। जैसे लाइक कि आप पिहा बीच जाना है, काफ़ी डेंजरस बीच है, काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स आती है। It's only available for maybe just for the surfing or हाँ, तो लोग वहाँ पे भी दो साइड में है, एक आपका दोनों बीच में वो एक पहाड़ सा है, उसके एक लेफ्ट और राइट में जी, दोनों इकट्ठे हैं। हाँ, कभी अगर जैसे बिजी नहीं होता तो वो सिर्फ एक जगह को मॉनिटर करते हैं, एक जगह को छोड़ देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सेक्लूडेड प्लेस चाहिए, प्राइवेट जगह चाहिए, तो जाते हैं और वो उसको गूगल नहीं करते, रिसर्च नहीं है पहले हुई, तो वो उसको उसकी डेंजरसनेस को जानते नहीं है। अगर आप पहले ही गूगल कर लेते हैं, वो अवेयर होते हैं कि ये काफ़ी इस पर बड़ी वेव्स आती है और इस पे वेव्स जो आती है वो आपको वापस अपने अंदर खींचेगी, तो आप शायद से वो नहीं अवॉइड करोगे उस चीज़ को। दूसरा आपने बोला था कि वेव्स के बारे में बोला था कि कोई बिल्कुल अगर आप वेस्ट कोस्टल साइड जाओगे तो काफ़ी वेवी है वो। दैट्स द वेवी वन। अगर आप उसको वो भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा सा आपको शांत टाइप सा बीच चाहिए तो आप वेस्ट को अवॉइड करके आप ईस्ट में जा सकते हो या नॉर्थ साइड में जा सकते हो। तो ये आपको पिक करना है, अपनी थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जो प्रेजेंट हमारे लिए भी नहीं होगी और दूसरे के लिए भी नहीं होगी। और आपने एक मेंशन किया था कि अगर रिमोट एरिया में जाते हैं तो इफ़ हम ट्रबल में आ जाते हैं, अगर हम अंदर उस पर सख्त हो जाते हैं, तो एक तो हम वहाँ पे कोई आपके पास बचाने वाला नहीं होगा, कोई लाइफ गार्ड नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि आप कहाँ हो। अगर कोई कैसे समहाउ इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है कि दैट प्लेस इज एन इमरजेंसी, जितने को इमरजेंसी वहाँ तक अराइव करेगी, पहुँचेगी, शायद से तब तक लेट हो सकती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप जो हमें गाइडलाइंस मिली है उसको हम फॉलो करें। डेफिनेटली। और दूसरा, हम जब भी कभी सोचते हैं कि पार्टी करते हैं अल्कोहल पी के, that could be dangerous, और उसमें हमारा जो you can't assess the situation, उसको हम जो हमारा पूरा बॉडी इम्पेयर्ड हुआ होता है, हमारा माइंड इम्पेयर्ड होता है, तो जो हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल की शायद से ये सेफ है, बट समटाइम इट्स नॉट। और जैसा हम you are over excited। जी,
कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, हम ध्यान में रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपने बिलव्ड वन के पास वापस भी रिटर्न करना है, या आप Exactly. अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों को मेक श्योर आप मॉनिटर करें। बिल्कुल। एक भी सिंगल सेकंड को अपनी आंखों से कहते हैं दूर ना जाने। वो अब आपने देखा वो जैसे Yes. बैंड लगे होते हैं उनके, Yes. या तो एंकल में बैंड लगा दो, और अपने Exactly. अपने रिस्ट में बैंड लगा दो, या The उनके board. रिस्ट में जी, Yeah. या खुद से भी लगा सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो, वो अपने आप के 1 मीटर के रेंज में ही आप रहेंगे। Wonderful. हाँ जी, तो ये आपको मेरे ख्याल That's से करें आप really, उसको। really good information. Madison, can I ask you precisely which one is actually safe beach, or any? Can you name any 2 or 3 beaches in south or in east or in wider Tamaki Makaurau? You can define as a safe beach for the family environment. We don't have a solid proof for this, but it's just obviously you can see West Coast is more risky and dangerous Yes, than the East Coast, yes. of course. And for East Coast, there'll be so many coastal and also the beaches allow us to enjoy our water activities. But I think preferably I would say East Coast will be the better one, even in the winter time. Yeah. Because West Coast will be somehow facing the huge wind and waves from Tasman Sea, so you can see that will be also more risky, to be Yes. honest. Yeah. And for East one, I would say staying with like East Coast, like a Couple Bay or some which most A little get in calm. as well. Yeah, Little calm. relatively, and also in some beaches in Malaitai North Beach. Shore, Malaitai. Yeah. But again, because water safety is just not from your own prevent drowning as well, but Yes. also we to put more attention on the local creatures, for example, like jellyfish, Yes. or Yes. little recently some sharks. Blue bottle. Yeah, so this is something came to us like the potential risk, but it's not coming to the threat to the swimmers. But again, it's also in our attention, so we should be more putting more attention on that. Yeah. Definitely. So first of all, we would love to request, just a humble request to our community. If you don't know how to swim, make sure you you should look out, which is safest area, just to have a little glimpse of beach water, or just a little kind of exploration of the beach life. But instead of going deep into the seawater, better you should have your picnic and have a long walk on the beach, and make sure you learn how to swim. And even after, it's a huge difference once you learn how to swim in a swimming pool. It's a totally environment at the seashore. It's not always the same. Sometimes it's full of rocks. And in swimming pool, the deepest must be around 1.2 max, or maybe 1 meter. But in the seashores, you can't assess that, how deep it is. Just 2 little more points to be added, further Yes. supplement what Constable just mentioned. Yeah. Before you go to the beach, Yep. you don't have to rush yourself to to enjoy the swimming fun yet. Yes. But please do your little homeworks done Yep. by accessing Safe Swim. Yep. It's a council website Yes. to make sure your destination attraction site is safe. Yes. And meet up with your conditions, the weather, the wave, the rip currents, that sort of thing. So this is one. Second is that you actually really need to tell your neighbors and family, hey, I want to go somewhere and I will be back sometimes. Yes. Because if you don't come back, they will be They get automatically report alert. to the Yes, police. call 111 Missing straight away. person. Yeah. Instead of you say, oh, just hold on and keep guessing, Yeah. and keep a phone call to some other unnecessary people. Yeah. So they can action this very immediately. So this is one of the key musts. Right. And also, no alcohol, of course, you addressed that already. At the same time, you talk to the duty lifeguard when you're on the beach. Yes. But again, not every coast or every beach has lifeguard down there. Yeah. So the thing is that whether you are in the water, Yep. you probably will be dragged into by the sea wave, like let's call rip currents. Yep. You are not a surfer, but actually you don't enjoy that. But the wave is so powerful, drag you back to the deep seas. And how are you going to do? Once you cannot touch the ground, you feel panic. That just instant drives you so crazy. Exactly. So how are you going to do this? So follow the recurrence, but before that, you should be, before you get in the water, you should be standing at a higher ground to make your assessment. Where is the recurrence? Talking to the lifeguard. Not just run into the Yeah, water. don't rush yourself to the water. I know everybody loved to. Yeah. I loved it too. But before that, I will keep myself alert. Say, Yeah. hey, I want to be safe for myself and the family. Yeah. So I need to check where is the recurrence.
Yes. So this is also one of the key, because rip current actually is not coming from one variety. It's also a different combination of rip current, sometimes Exactly. on and off, you know. So once the best way is you talk to lifeguard, because they'll be helping you identify where's the rip current and put Yep. your two flags in between. That's the safe place. Mm. So people probably will be grumbling, say, this is a too small area. I mean, I should be very confident on swimming. Why want to do this? Yep. I want to find someone out of the flag. Yes. Out of flag stands for recurrence down course. there. So you don't want to get yourself trouble for your family. That's why. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਪਨਸ ਐਂਡ ਟੌਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮ ਬਿਟਵੀਨ ਫਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਰਸ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬੀਚਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। So, is there anything else you want to add, Medicine, especially for Just water safety? particularly for most Indian people, probably will be quite enjoy water safety with their toddlers or small kids at their backyard, because they think that they will be really hesitate. They say, "Oh, there's so many people crowded on the ocean side, so it's on the beach. This is too busy. So why don't we just enjoy it? It's a controllable environment at backyard." Yeah. But again, start your water safety education from your backyard, because Well said. toilet seats, bathtub, Yes. sink, Yes. backyard inflatable pool is also 2 or 3 touch points for water. So it's also another part. Probably you do online shopping, you need to pick up the phone, you need to make some your barbecue, so you, Yes. you can't look back your kids. But you know the kids cannot be managing themselves properly. So if that things happen, then you will be so regret. Exactly. So the key message from DPA at this point will be like make sure you look after your kids. You can see him, you can hear him, but most importantly, you can touch him. Yes. Your Otherwise you arm can't. reach, Yeah. in your arm reach. This is really important, because sometimes even you can hear, Otherwise you can will be see, guilty you for can- whole life. Yeah. Yeah. Don't make that happen. Yeah. Yes. So just a Yes. key message I want to share with people. Yeah. Definitely. So drowning prevention Auckland ਵੱਲੋਂ मेडिसिन चैंग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। विपिन जी, आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 बातें शेयर करना चाहूँगा जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे जी। पहला तो चाहे हम बीच में जाए, चाहे हम या स्विमिंग पूल कंट्रोल एनवायरनमेंट में जाए, कोई भी जगह सेफ नहीं हो सकती है। अच्छा जी, अगर आप पूल में भी अगर हम जाते हो, अगर आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, मेडिसिन ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वी हैव गॉट द कॉल्स आप समवन इज ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है, कैसे? अपनी हमारी लापरवाही की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे स्पेशली ऐसा करते हैं, और खासकर जो अभी नए स्विमर है जो सीख रहे होते हैं, खासकर अडल्ट्स स्पेशली माइग्रेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जी। तो वो थोड़ा सीख लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि दे फील कॉन्फिडेंट इनफ टू स्विम। Exactly, just the basics. बेसिक, हाँ। तो वो क्या करना चाहिए उनको, नंबर 1 वहाँ पे स्विमिंग पूल में देखा होगा आपने बहुत से लाइफ गार्ड्स होते हैं। Yes. उनको बोल दो कि ये इस कॉर्नर में मैं स्विम कर रहा हूँ, तो हैव आई ऑन मी, डेफिनेटली वो हमेशा रखेगा आया। Yes. तो कुछ भी अगर होता है तो वो वहाँ पे है। और दूसरा, कभी बिजी है या फिर आप लेट जाते हो या अर्ली जाते हो, वहाँ पे सिक्योर उनकी स्टाफ कम होगा, जी। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी आपका बिलव्ड वन या कोई भी आपका जो वहाँ पे फ्रेंड है, वो अगर आपको पानी में वो अनकंफर्टेबल है, तो उसको लग रहा है कि वो ड्राउन कर रहा है, तो आपको उस पर डायरेक्ट जंप नहीं करना है। क्योंकि आप भले ही अच्छे स्विमर हो गए, ये इट्स फैक्ट, हमें भी ट्रेनिंग में बताया गया, जैसे डमी पे करते आपने जो तो ट्रेनिंग में। हाँ जी, उस पर क्या होता है ना, जो पहले एक जो डूब रहा है वो पैनिक करेगा, वो कर रहा होता है। आप उसको बचाने के लिए आप जो गुड स्विमर, वो आपको ऊपर आने करने के लिए वो आपको नीचे वो पुश करेगा ऊपर आने के लिए, तो आप भी डेंजर में आ जाओगे। तो आपको ये करना कि देखो, अगर आप वहाँ पे रोप है, रोप को फेंको, या वो फ्लोटेड बलून वो जो रिंग्स होता है उसको फेंको, या आर्म से रीच कर सकते उस पर जाओ। कभी भी गलती मत करो आप जंप करोगे करके उसको बचा दोगे। डजंट मैटर आप कितने स्ट्रॉन्ग स्विमर हो, एग्जैक्टली, कभी ना कभी आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। और सेकेंडली, बिफोर एंडिंग दिस वन, ये इस पे हम टच करना भूल गए कि पीपल, जैसे समर आता है तो वी टेंड टू बाय बोट्स। यस।
बोटिंग में हम क्या करते हैं कि नया नया शौक पाल दिया कि हम बोटिंग लेके हम अपनी फैमिली को बाहर जाएंगे। जी बिफोर आप बोटिंग लेते हो खुद, जी। मेरा भी ड्रीम है आई विल बाय अ बोट, पर Yes. होपफुली इट विल कम ट्रू। हाँ। बोट जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को बाहर ले रहा हूँ, Yeah. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ स्किपर ऑफ दैट बोट और कैप्टन, Yes. कि पहले तो मेरे को क्या करना, चेक करने से पहले उसके वेदर को चेक करना है कि अगर हम सैटरडे को जा रहे हैं, संडे किसी भी डे में जा रहे हैं कि उस दिन का वेदर कैसा होगा, वो आपका मरीन वेदर में आप check बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा आपको क्या करना है कि बोट में जाने से पहले जितने भी आपके उस पे ऑक्यूपेंट्स है वो सारे लाइफ जैकेट पहने हो। Very important. वो अगर बिना उसके आप कभी भी मत जाएं, वो जरूरी है। और बिल्कुल आपका सही। कम्युनिकेशन, जैसे अपने नेबर्स को Yeah. या और अपने, साथ में वॉकी टॉकी भी हो। हाँ वो कम्युनिकेशन, Both Yeah. mobile phone and the walkie-talkie. Exactly. Yeah, yeah. तो उस पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको फोन मोस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं ये वाटर प्रूफ है और नया वन, बट वी डोंट नो कि आप वाटर प्रूफ एक कंटेनर ले लें या प्लास्टिक बैग ले लें, उसमें अपना फोन रखें, तो वो कभी भी कुछ भी होता है तो वो एटलीस्ट वो डैमेज नहीं हो पाएगा। और Yes. दूसरा आपका क्या बोलते हैं उसको, वो रेडियो से आपको वॉकी टॉकी में आप उसे अपने आप को कॉन्टेक्ट करिए। और दूसरा हम बोलते हैं कि अल्कोहल का मैंने पहले भी बहुत जिक्र किया था। Yes. फ्रेंड्स जाते हैं मेरे, चलो हम पार्टी करते हैं, फिशिंग करेंगे, थोड़ी सी बड़ी बोट है तो उस पर भाग भी करेंगे। समटाइम हम ऑल्टर कर देते हैं अपने इसको, तो वो अवॉइड करें। और जब भी इसके रेडियोस के स्पेशली डिफरेंट चैनल्स आते हैं, उसका नाम उस पर है आपका कौन सी फ्रिक्वेंसी में आप जा सकते हो। जी इस पे रेडियो के स्पेशल चैनल है VHF 20, 21, 22 और 23। अच्छा। आप ये इसको कर सकते हो, तो ये ऑल द टाइम मॉनिटर्ड बाय कोस्टल गार्ड। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਛਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you very much for your time and for your expert advice, Benson. Thank you. And also a big thank you to younger brother Ratan Zenta. Thank you. Thank you. Thank you very much. मैं उम्मीद करता कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ को ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲਓ।